झाबर सिंह खर्रा कार्यक्रम में फिलहाल मौजूद हैं और 45,000 करोड़ से अधिक के निवेश के एमओयू होंगे। होटल राजपुताना में आयोजित है ये प्री समिट। राजस्थान के तहत नगरीय विकास विभाग की प्री इन्वेस्टमेंट समिट और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दीप प्रज्वलन किया। और जयपुर से फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं यूडीएच मिनिस्टर झाबर सिंह खर्रा। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी मलखान मीणा फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। मलखान, क्या कुछ पूरी जानकारी है? राइजिंग राजस्थान दिसंबर में होगा, लेकिन उससे पहले प्रदेश में प्री समिट्स का आयोजन हो रहा है और आज भी 45,000 करोड़ से अधिक के निवेश के एमओयूज होने जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से दिसंबर में जो राइजिंग राजस्थान का आयोजन होगा उससे पहले आज लगभग 45 करोड़ रुपए का एमओयू होगा। तो यहाँ पर इस वक्त जिस तरह से यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और यहीं पर तमाम जो एमओयू है, चाहे वो अर्बन सेक्टर से संबंधित हो, जिनका ये प्री समिट माना जा रहा है, इस प्री समिट में उनके साथ एमओयू किया जाएगा। और वहीं एमओयू के बाद में जिस तरह से जो राइजिंग राजस्थान का दिसंबर में आयोजन होगा, उससे पहले पूरी तैयारी सरकार कर रही है। साथ में जो निवेश करता है, उनके साथ एमओयू की जाएगा और तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे वो यूडीएच मंत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रम किया जा रहा है, चाहे वो डीएलबी के अधिकारी हो, चाहे जेडीए के अधिकारी, तमाम जो अधिकारी वो यहाँ मौजूद है। हालांकि निवेशकर्ता भी हैं, बड़े बड़े निवेशकर्ता, उनके साथ में ये एमओयू किया जाएगा। मलखान, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दीप प्रज्वलन किया, मुख्य सचिव ने भी दीप प्रज्वलन किया, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत। तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। कितना लंबा आज का ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है, क्योंकि लगभग 25 बड़े निवेशक हैं जो राज्य सरकार के साथ आज इन एमओयूज पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से राइजिंग राजस्थान का जो ये सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है कि अर्बन सेक्टर के साथ में ये किया जा रहा है, जिसमें तमाम जो निवेश करता है वो यहाँ मौजूद है। चाहे बात करें कि जिस तरह से जो हीरानंदनी कंस्ट्रक्शन के जो फाउंडर हैं निरंजन हीरानंदनी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, वहीं टाटा प्रोजेक्ट के एमडी यहाँ विनायक पाई हैं। वहीं अगर बात की जाए कि बड़े बड़े जो फाउंडर हैं, जो बड़े बड़े निवेश करता है, वो यहाँ पर है। क्योंकि यूडीएच मंत्री से जब शुरुआत में बातचीत हमने की तो उन्होंने कहा कि जिस तरह का एमओयू होगा तो राजस्थान की जनता को विकास के काम मिलेंगे, राजस्थान को आगे डेवलप करने के काम किए जाएंगे। इसी को लेकर आज ये सबसे बड़ा एमओयू है और ये पूरी तरह से जो यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है। और इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद है प्रमुख सचिव यूडीएच वैभव प्रभारी और मंच पर बैठे हुए। ऐसे में ये कार्यक्रम बड़ा अहम कार्यक्रम माना जा रहा है। चलिए मलखान, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो मुख्य अतिथि नगरीय विकास मंत्री हैं यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा और साथ ही कार्यक्रम में मुख्य सचिव सुधांशु पंत मौजूद हैं। और इस समिट में 25 बड़े निवेशक राज्य सरकार के साथ 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश करारों पर हस्ताक्षर करेंगे। Providing for time-bound manner, and it also has BIP has specialized team for investor support and handholding. So any investor who is willing to come in the state can approach BIP. BIP has a team that will handhold, that will support, that will follow up the proposals in various departments. Rajasthan has a very attractive Rajasthan Investment Promotion Scheme which was launched in 2022. There are certain highlights which are there on the slide, but I won't go into the details because recently Cabinet has approved Rajasthan Investment Promotion Scheme 2024, which is going to be launched soon, which has got further attractive propositions for the investors. Once this scheme is launched, I am sure
the attractive propositions and incentives that state is giving will be a huge boost for the investors in the state. Now in the urban sector, Rajasthan has uniform township policy. This policy was launched in last decade. We are in the process of further improving it. We already formed a committee. Committee is taking suggestions from various stakeholders, and we are going to soon launch further updated township policy, affordable housing policy, building bylaws, which we are just sharing, which are applicable across the state for all urban local bodies. State has online process for land use conversion, 90A, freehold pattas, and many other services. To facilitate investors, state has delegated its powers to empanel architects for approval of building plans and issuance of completion certificates. Now, an empaneled architect can provide approval for building plans if it is as per building bylaws up to an area of 2500 square meters. So for coming up with a construction in a plot size of up to 2500 square meter and up to a height of 18 meters, you don't need to approach government urban local body, and an empaneled architect can do it. And as far as completion certificate is concerned, any kind of building, empaneled architect can provide a completion certificate. We also have a very clearly laid out policy for allotment of government land for premier investors and institutions. Then there is affordable housing policy, which provides for multiple models for affordable housing. It's developer-led, government-led, PPP. So it has a very attractive affordable housing policy. Then, as part of the building bylaws and master plans, we allow high-density mixed land use development along major roads. So you don't have to come for land use change and other permissions. It is automatically allowed within our master plans. Then unlimited BAR is permissible. Up to BAR, up to 2 is free. Above that, you can buy, but there is no limits to BAR, subject to other regulations. And also for green building, we provide additional BAR of 0.25. So if a developer is coming up with a green building, so then additional free BAR is available. Under Chief Minister's Jan Awas Yojana for EWS and LIG housing schemes, there is no conversion charges, there is no building plan approval charges, and then the free BAR, which is 2 in normal cases. Here, free BAR of 3.75 is available, and if the project is completed in time, additional BAR of 0.15 is made available. So there are a number of incentives that's being made available for promotion of EWS and LIG housing. Tourism, as we all know, is a very, very attractive proposition, and investment possibilities are huge in this sector. We have number of tourism destinations: Udaipur, Ajmer, Jaipur, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur. So state has a Rajasthan tourism unit policy which provides for exemption for conversion charges for all tourism units. Industry status: Rajasthan is one of the very few states which is accorded industry status to the tourism units, and using which there are a number of benefits that come in terms of electricity charges that tourism units are supposed to pay, UD tax that these units are supposed to pay. Similarly, single window clearance has been provided, and FAR, double of normal FAR, is provided to tourism units without any betterment levy. So there are a number of incentives to tourism units in the state. Now, in the last part, the investment opportunities in urban and infra sector in the state, I would deliberate a little